and good to have you with us in this edition of the Urban Debate. We put the spotlight one more time on the farmers' protests, and today we do so because of what the Supreme Court has said. Yes, viewers, in a very unprecedented courtroom hearing that took place today, and I call it unprecedented not just because it was virtual and there were the usual series of tech glitches, including the point where the bench even got up to leave and nobody else understood what was going on. But I say unprecedented because of what the Supreme Court said and the very strong comments and observations that were made by India's top court against the central government over the handling of the farmers' issue. Now, as you know, a bunch of pleas regarding removal of farmers from borders and the other grievances that they've raised, a bunch of these pleas are currently being heard by the Supreme Court. Coming down heavily on the center, the Supreme Court said, and these are the 10 things that we've picked out from the hearing that took place today. Supreme Court said it's disappointed with how center has handled the issue and that the court believes the government is not handling this issue correctly, though this is a bench headed by the Chief Justice of India. The Supreme Court even asked whether consultation was actually held with the stakeholders before these laws were really brought in. And then again, just like a few days ago, again emphasize on why doesn't the government put the implementation of these laws on hold pending the conversation. So the court isn't saying really to withdraw the laws or repeal the laws. The court is simply saying don't go ahead with the implementation until you figured out a solution with those who are protesting. Now, this is what they are pushing for. There is no final decision on this yet. But the court definitely asked, why is there insistence by the central government on the implementation of these laws? Will you, the government, hold the laws? Or should we? This is the warning coming in from the Supreme Court that if you're not going to take this step, then maybe we will. Remember, the government has already made it clear in the court that they are not in the favor of holding the laws or repealing the laws. But with this fresh push coming from the Supreme Court, the government will have to rethink its stand. Because the Supreme Court says, we are the top court and we will do our job. Don't want to stifle the farmers or their protest, and hence the protest will continue. There was a bit of a conversation on whether they should move to another location, but there is no block on the protest by the farmers. The court said we want to ensure no violence happens on the streets, even asked the question who will be responsible for bloodshed if any takes place. In a sense, also reminding all stakeholders, including the government, that let's move swiftly towards a solution, else who will be responsible for what happens on the streets? So viewers, I have very few basic questions based on what the Supreme Court has said. Some of these questions we've been asking already, and the court is now asking, were there consultations before the laws were brought in? But more importantly, will the government admit that they haven't handled it properly, since the Supreme Court is also of that view now? And what happens next? Should the government by itself put these laws on hold until the conversation with farmers continue? Is that the only way forward for a solution? If not repealment, putting these laws on hold. Let's say good evening to Sudesh Verma, spokesperson for the BJP, Deshratan Nigam, RSS supporter, joining us this evening, Abhimanyu Kohar, national coordinator for the Rashtriya Kisan Mahasangh, Dharmendra Malik, spokesperson for the BKU, Adil Singh Boparai, national spokesperson for the Congress party, also joining me this evening. Let me actually start with Abhimanyu Kohar. Kohar ji, ये सवाल है जिसके लिए सरकार ने लॉयर्स को भी बोला है कि वो जाएं और किसानों से बात करें कि अगर एक कमेटी बनाई जाती है और इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होल्ड पे डाल दिया जाता है तो क्या किसान घर चले जाएंगे, अभी के लिए प्रोटेस्ट रोक देंगे? देखिए तन्वी जी, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें लगभग 500 किसान संगठन हैं और हम जो भी फैसला लेते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं, वो बहुमत के आधार पे नहीं, वो सर्वसहमति के आधार पे लेते हैं।
तो एक बार पहले माननीय कोर्ट की तरफ से कुछ लिखित में आ जाए, उसके बाद हमारे सभी सीनियर लोग बैठ के, सीनियर नेता बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई जवाब देने की स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो हमें आज नोट करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई अब तक ऐसा कोई भी किसान संगठन उनके पास नहीं आया है जिसने इन कृषि कानूनों का समर्थन किया हो। तो इससे हमारी उस बात पे मोहर लग गई जो हम लंबे समय से कह रहे थे कि भाई सरकार सरकारी दरबारी और फर्जी किसान संगठनों को अपने पास बुलाती है और अपनी चमचागिरी कराती है। अभी पिछली मीटिंग में भी सरकार ने ये कहा कि भाई बहुत सारे किसान उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि ऐसे कोई किसान संगठन नहीं है जो इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हो। दूसरी बात, माननीय कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख बड़ा निराशाजनक है। वो इसलिए भी कहा गया क्योंकि देखिए 80 से अधिक किसान कड़कड़ाती ठंड में शहीद हो चुके हैं। अभी 8 तारीख को बैठक हुई, उसके बाद 7 दिन के बाद अगली बैठक की तारीख दी गई। तो ये दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी नहीं है। तीसरी बात, माननीय कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है और ये अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता है। एक बात हम क्लियर कर दें जो हम पहले दिन से कर रहे हैं सभी किसान नेता, कि हमने रास्तों को नहीं रोका है, ये तो दिल्ली पुलिस ने हमें रोका है। हम तो आगे जाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगा दी, बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए सीमेंट के, और उसके बाद हम वहां पे बैठ गए। तो ये रास्ते क्यों रुके हैं, इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस और सरकार से लिया जाना चाहिए। ये रास्ते क्यों रोके, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए जरूर। यही टैक्टिक पहले भी यूज की गई है। सुदेश वर्मा, यू हर्ड अभिमन्यु कोहर जी ने जो 3-4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली आज कहे हैं, आपका जवाब? देखिए तन्वी जी, सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशंस की जो किसान यूनियन इस लॉ के फेवर में है वो नहीं आए हैं, कोर्ट नहीं गए होंगे, क्योंकि नेचुरली जिसको लगता है कि एजिटेशन में है वो ज़्यादा एग्रेसिवली हैं और वो गए होंगे। और जो लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक स्टेप ले चुके हैं, ट्रेडर्स के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो किसान ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जाए। सरकार के पास वो लोग आए हैं, सरकार के मंत्रियों से मिले हैं और अपना एक्सप्रेशन, अपना सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है। अगर उसका लिस्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग दे सकते हैं, आपको चाहिए तो आपको भी दे सकते हैं, पूरे मीडिया में दे सकते हैं। क्योंकि ये तो आपने देखा कितनी बार कितने यूनियन के लोग आके सरकार को बोले कि ये कानून को विड्रॉ नहीं करो। तो सब्सटेंटिव पार्ट है, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है ठीक है, कोर्ट जब हमसे मांगेगी तो हम लोग कोर्ट को दे भी देंगे। कितने यूनियन समर्थन में कोर्ट में नहीं गए दूसरी बात है, कोर्ट में जो एग्रीड पार्टी होता है वो जाता है, वो एग्रीड नहीं मानते अपने आप को तो नहीं जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंटरवीन करें। दूसरी बात यह है कि देखिए सरकार ने बहुत एहतियात लेके, बहुत सोच समझ के फार्मिंग रिफॉर्म के लिए इस 3 कानून को लाया है। उसके बाद सरकार बातचीत भी कर रही है और सरकार का ऐसा मानना है अगर किसान भी खुले दिल से बातचीत करें, एक एक बिंदु जहां उन्हें प्रॉब्लम है सरकार एड्रेस करने के लिए तैयार है, खुले दिल से बात करें तो निश्चित ही समाधान मिलेगा। अगर कोर्ट ने भी कमेटी की बात की है तो कोर्ट ने वही बात की है जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार, जो एनडीए मोदी जी की सरकार है, वो भी बात की। कमेटी बना देते हैं एक्सपर्ट्स की, आप एक्सपर्ट को अपने बात को रखिए और उसके बाद जो कमेटी बोलेगी उस पर माना जाएगा। कोर्ट ने भी वही कहा है। हम भी नहीं चाहते कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, मासूम लोग, वो लोग क्यों वहां एजिटेशन में, उनको घर वापस जाना चाहिए ठंड में। हम तो उनके साथ हैं, किसान के खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप ये मुद्दा उठा लेंगे कि नहीं कानून को वापस करो, तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक क्राइसिस है। वो क्राइसिस ये है कि कानून बनेगा सड़क पर, ये कानून बनेगा पार्लियामेंट में। फेयर इनफ मिस्टर सुदेश वर्मा, आज को पूरी मेजोरिटी है, सरकार अच्छा सोच के कानून बना रही है। मिस्टर सुदेश वर्मा, कुछ लोग जिसको कानून नहीं पसंद है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण भी, पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी, अगर वो आके बोलते हैं कानून वापस करो, ये आप तो यहाँ बोल रहे हैं क्या आप ये जाके सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे? ये आप यहाँ बोल रहे हैं क्या आप ये जाके सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि जो ये डिमांड कर रहे हैं किसान की कानून वापस लो, वो पॉलिटिकल या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन सेड एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू मिस्टर सुदेश वर्मा। द कॉन्वर्सेशन टुनाइट, सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि हम मेरिट्स ऑफ द लॉज में नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स और द डीमेरिट्स ऑफ द लॉ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने इस इशू को ढंग से नहीं हैंडल किया। क्या आपने फार्मर से इसके पहले बात की और क्यों है ये इंसिस्टेंस कि हम ये लॉ इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे जबकि ये प्रोटेस्ट चल रही हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द इशू मिस्टर वर्मा। Tanvi, again we are trying to turn the clock backwards.
You see, there is an experience of 20 years and more than that, where various commissions and committees have recommended reforms in the farming structure of this country. All the parties had consensus. Some party and government in other states have already reformed it. As for example, in Bihar, mandis have been reformed. In Maharashtra, it has been reformed. Contract farming already there is in Punjab and other states run by the Congress. So there is nothing in this legislation which has not happened already in this country. So we are saying, with the best interest, after of course talking to all the interests, maybe some farmer community they have not been consulted, they can say, but by and large across the country there has been a consensus, and based on that consensus the government has come out with 3 legislations. Still the government is saying, okay, fine, we thought what is good for you, we have come with that. Even then now, if you have some problems, come with a specific clause. This clause is a problem. This is endangering our lives. Please tell us, we'll address those issues. But Okay, nobody is talking about that. let's see. You So come to the far table you've and not say, managed to "Scrap the convince law." the Is that Supreme way to Court. go? That is the whole point. So far, you've not managed to convince the Supreme Court. We'll have to wait and see how the government manages to do that. They've given you another, breathing space, another chance today, where the lawyers have been told to go and speak to the farmers, while the government has been asked to consider why can't you put the laws on hold, the implementation on hold, while these conversations continue. Let me bring in our other panelists also, Mr. Sudesh, and I'll come back to you. Let me answer this. Yeah. Let me answer this. A very technical question which you have asked. The court has also observed. You see, what is the issue before the court? The issue before court is constitutionality of the legislations. If we have transgressed our power, central government has transgressed its power, then the law should be struck. If it is constitutional, it should be upheld. Now coming to the issue of whether implementation can be kept in abeyance for some time till a resolution is found out. You see, already agreements have been signed between traders and the farming community. Okay. So those things that have already happened, are you going to turn the clock backwards? That is the whole issue. Will it not create a crisis? We have to see in a comprehensive way. And the other issue, which is equally important, Tanvi, kindly bear me for 20 more seconds. You see, tomorrow, any law made by Parliament, some people will come on the street and they will say, we don't agree, withdraw the law. Then the Parliament should not function. Is the people in the road maybe there is a larger consultation done where your own allies and your own supporter organizations, agricultural arm at least backs you. They are also not doing it. The agricultural arm, even of the organizations that are linked to your party, are not backing you. Maybe you generate a wider consensus before you take it through Parliament. Okay, let's not go backwards. Like you said, let's talk about what's next. आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे. धर्मेंद्र मलिक, यही सवाल बार बार आ रहा है कि आगे क्या होगा. क्या किसान ये मानने के लिए तैयार है कि अगर लॉस को होल्ड पे डाल दिया जाए और एक कमेटी बनाई जाए तो आगे बातचीत हो? ये कह देना कि बस रिपील करो नहीं तो कुछ नहीं होगा, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बेशरम प्रवक्ता हैं. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया. अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता बची है, इन्होंने कहा ये किसान का आंदोलन नहीं है, खालिस्तान का आंदोलन है, पाकिस्तान का आंदोलन है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. अरे आप जैसे बकवास प्रवक्ताओं ने बोला है. एक दिन समित पात्रा ने बोला है, सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, सुधांशु ने बोला है, समित पात्रा ने बोला है. आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए. एक मिनट सुदेश वर्मा, वन मिनट मिस्टर सुदेश वर्मा, 1 मिनट, 1 मिनट. धर्मेंद्र मलिक जी, एक तो इस वाले पैनल में हम सारे पैनलिस्ट से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो जो दूसरी जगह पे किसने क्या बोला वो रहने दीजिए. आज हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे की बात सुनिए और बोलिए. अब धर्मेंद्र मलिक, आप अपना पॉइंट खत्म करिए, फिर सुदेश वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे. जी देखिए, जो आपने सवाल किया है हम पहले भी बता चुके हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा उसके बाद हम बैठ के चर्चा करेंगे. अभी हमारा स्टैंड ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने और तीनों बिल वापस हों, तब तक हम दिल्ली से जाने वाले नहीं हैं. ओके, जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली से नहीं जाएंगे. दैट्स वेयर दिस इज गोइंग टू गेट स्टक.
Adil, this is where it's going to get stuck again, irrespective of whether the Supreme Court says set up a committee, find a solution, put the laws on hold. Tanvi, first and foremost, the Bharatiya Janata Party wears arrogance as a badge of honor, and it's been exhibited by my very dear friend Mr. Verma. Let me quote to him what the Supreme Court has observed today. We are extremely disappointed at the way the government is handling all this. We don't know what consultative process you followed before the laws were passed. Now, this is not Adil Boparai or the Congress or the farmer leaders. This is the Chief Justice of India. Now, if Mr. Verma wants to sit over the Supreme Court judgment, that's entirely his decision. Now, coming to the merits of this matter, we've discussed it ad nauseum, the manner in which the BJP has thrusted these laws. Mr. Verma has very vehemently spoken in favor of these laws. Can he even express one word of empathy and compassion for the 60 farmers who've lost their lives compounded by the bitter cold and the difficult living conditions? Does the BJP have any compassion for the annadatas of this country? It is not that the farmers had come to Delhi all of a sudden. They were protesting since June. The agriculture minister even refused to meet him. So therefore, this reflects the arrogance of the Bharatiya Janata Party. Now, a lot is being said. A calumny campaign was run against the farmers. Who is blocking the farmers? Who has dug up the roads? Who has put up trenches? Who used tear gas shells? Who used lathi charge? It is the BJP government. The farmers are Indian citizens. The farmers, as a matter of right, can come to Delhi. If they want to go to Ramlila Maidan and congregate there and express their dissatisfaction, what problem should Mr. Narendra Modi have? Didn't Mr. Vajpayee go and protest at the boat club? Didn't Mr. Vajpayee go and protest at the Ramlila Maidan? And didn't the Congress party recently allow, when we were in power, allow the Anna movement at Ramlila Maidan? So what is this high-handed treatment which is being meted out to the farmers of this country? Number two. Number three, Tanvi, and I say this as a farmer and as somebody from the opposition, the farmers on this country are not willing to accept anything less than the repeal of the laws. These laws reduce us to laborers on our own fields. We are not agreeable to become serfs for the Adanis and the Ambanis. We will not accept this death warrant. Mr. Narendra Modi and his cabinet must understand this. They can use the pliable section of the media. They can call us all sorts of names, call us unwarranted labels, but this is a struggle for our existence. Okay. Farming is a way of life for us. Okay. Farming is our mother. Let me get Sudesh Verma to respond to that, and then I have a question for Mr. Nigam. But Sudesh Verma first. You see, by bringing in emotional quotient, you are trying to divert the issue. We are more emotional than you about those people who are suffering. And we actually accuse you of doing politics and instigating farmers because women and children, they should not have come. There is no tradition in this country of their participating in any political agitation or such agitation. And we are completely with them. And we are very sorry that this is happening. And you should be talking the truth. You are not speaking the truth, Adil Boparai. And that is the precise problem. You were the ones who spoke about reforms. What we have done, actually you were disposed. In 2019, we have argued it, Tanvi. I don't want to repeat it. Right. You see, there's no gainsaying that if you go on doing politics like this because you're looking for an opportunity to fire through the shoulders of anyone who is protesting against Mr. Narendra Modi, then we are not going to be with you. We are ready to talk on every aspect of the laws we have brought in. But nobody is talking about that. If you talk of emotions, I can also talk about emotions. But you see, when police stops you, what is the provision in this country? Anywhere the police stops you, you stop there, you squat there, do the dharna. But there is a dharna site meant for that. If you squat on the national highways and stop the roads, what do you expect the police to do? But Mr. Verma, who was stopping the roads is also debatable. Mr. Verma, who was stopping the roads is also debatable. If you are going to say peacefully protest in one corner, keep protesting in one part of the country where nobody is going to give any attention to you. 1 minute, Mr. Verma. 1 minute. I have a problem with what you are saying. May I? 1 minute, Adil, 1 minute. I have a problem with what you are saying. You want every single protest to be the kind that happens in one part of the country where it gets ignored, forgotten, and nothing comes out of it, Mr. Verma. We've seen far too many of farmers' protests where they have
tried to make a point, gone on protests and dharnas for days together, sat with skulls, buried themselves in ground, walked on railway tracks, gotten blisters on their feet with all the walking that they have done. But if they go and sit in one corner and go back, then nothing happens. So if you expect them to go and sit in one part which you decide where they protest at that location that nobody bothers about, who's going to listen to them? Who's going to listen to the point that they're making? Why is it a problem as long as they're making the point peacefully? Tanvi, there's no problem. You can protest. The Supreme Court has also upheld the right to protest, and we all respect that. And we are acting in a very, very patient way. We are talking, trying to argue with them, trying to persuade them that this is not the way to go about. Please don't ask for repeal of the legislations. You are undermining the authority of Parliament and the Constitution. Okay. Please come and tell us. Come and tell us where is the problem. Clause by clause, issue by issue. Before we go to repealment of the laws, I want to go back to what the Supreme Court said today. Before we go to repealment of the laws, yes, Adil, 30 seconds to you. But let's not talk about, repealment of laws right now. We'll address that in the later part of the debate. Go ahead, please. Make your point. Tanvi, the core issue today is that we have an arrogant government. In any democracy, and I've said this before, you consult all necessary stakeholders. Today, you want to privatize the entire agriculture sector. You want to hand over 25 lakh crore rupees, almost 20% of our GDP, without consulting the very stakeholders who live off this land, for whom this is their mother, for whom this is their basic means of livelihood. And then you say, please don't protest. And then if we express our legitimate grievances, you label us as Naxalites, you label us as anti-nationals. You fire tear gas shells. This is not how democracy works. This is the elementary problem here. Narendra Modi is used to riding roughshod over all democratic avenues. Okay, but all of that narrative building, whoever was doing it, Adil, all of that has not worked. Let's make it very clear. None of the attempts by any political parties, including the Congress party, trying to appropriate this agenda has not worked. The farmers have very smartly, by themselves, continued with this protest without getting deviated. And that's what really matters. That's what is coming through even now to the Supreme Court, which is why the Supreme Court has agreed that their protest should continue. Now, let's come to the point of the court repeatedly asking, why don't you hold the implementations of the law? Can the Supreme Court do that? Is there a past precedent? Mr. Deshratan Nigam, on a legal aspect, will the Supreme Court have to find a legislative wrongdoing as a reason for it to put these laws on hold? Laws that have been passed by the Parliament, on what grounds can they now be put on hold? Tanvi, let us make crystal clear that Supreme Court has made these as oral observations. They are not a part of record still, although it does indicate their mind. Unless it becomes a part of record, it would be too premature to say anything. But I can speak on legal principles. When a law is made, the mandate of the Parliament is that the government must implement those laws. It cannot withhold the law because the express direction of the Parliament is to implement them. Now, the Supreme Court, yes, has the powers to judicially review those legislations and to see whether as Attorney General today said in the court, that whether these laws have been made by Parliament in a manner that it has legislative competence. Does it violate any fundamental rights, or does it violate any constitutional provisions? The Supreme Court has not yet gone into those questions, and neither any party addressed any arguments on those. First, these three parameters have to be satisfied before a stay has to be granted. And then the second stage would come where balance of convenience, grave and irreparable loss, and which cannot be compensated, has to be gone into. So at this stage, to ask a government to hold the law would go against the will of the Parliament, which has mandated that these laws have to be implemented. One. Now, secondly, what Adil was saying about certain, things, but let me remind him, the big talks that he is doing now is probably he was in a school, is studying, is too young for that when Kapil Sibal made those arguments
in the parliament, or Manmohan Singh made that arguments in favor of exactly the same laws, or P. Chidambaram made his case very astutely and vociferously made this case for exactly the same arguments. But now that U-turn probably is the instructions that Adil has got from the appropriate leadership of the Congress. That's not his fault. I'm not blaming him, because the spokesmen speak on behalf as per the instructions they receive from the leadership. And especially, I'm slightly baffled by the observation of the Supreme Court that there are not a single petition before the court from the farmers who are saying that it is beneficial for the court. And Sudesh Verma appropriately pointed out, it is the people who feel aggrieved go to the court, not people who are happy with a particular law. As a lawyer, let me tell you, nobody has come to me to say that this law is beneficial, let's go to the court. Anybody who feels aggrieved has to go to the court, and some people who have felt aggrieved have gone to the court. And that kind of, statement coming from a court slightly amuses me and baffles me also, because I have never come across in my, decades of practice such kind of a statement from a court. And secondly, court feeling scared of the violence, anticipated violence, that's a law and order issue. Government has to handle it. Such kind of a statement coming off a court reeks of a fierce psychosis in the mind of a court. That's a wrong message which is being sent. Let government handle the law and order. Anticipation of a violence where it is nobody's case, not even farmers are saying that they will resort to violence. They're saying we are sitting on a peaceful protest. And it's not the government's case that the violence is going to take place. Nobody said so. So this angle somehow is also baffles me. So the court has power to stay, but it has to go into all those questions which I raised. Okay, the court does have the power to stay, but of course it will have to explore various angles before it does so. On the aspect of violence, I just want to quickly ask Mr. Malik, Dharmender Malik ji, इंसिडेंट हुए हरियाणा में जहाँ पे BKU के ही कुछ लीडर्स ने आके फिर कहा कि ये हमने करी है रोक टोक तोड़ ताड़ और आगे भी हम ये करेंगे. क्या ये सही तरीका है? क्यों हमें इस तरीके के वायलेंस में इन्वॉल्व होना है जबकि शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक आपकी बात सुन रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जो है इस तरह की किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं. और मेरा ये भी मानना है, नहीं मेरा ही नहीं, आंदोलन का भी मानना है कि इस तरह का जब दौर होता है तो थोड़ा सा राजनीतिक लोगों को भी पेशेंस बरतना चाहिए और जबरदस्ती पंगे में नहीं पड़ना चाहिए कि हम रैलियां करेंगे, उपदेश देंगे, वो करेंगे. वो गुस्सा था, वहाँ बहुत ज्यादा आक्रोश था, वहाँ क्षेत्रीय किसान थे, लोग इकट्ठा हो गए, कोई लीडर्स नहीं था और किसानों ने कर दिया. लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं. दिल्ली में हम बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रहा है. ऐसी कोई भी कार्य न करें जो हिंसा की श्रेणी में आता हो. लेकिन राजनेताओं को भी हमारी सलाह है कि आज गुस्सा है जनता के अंदर, वो भी थोड़ा सा अभी फील्ड में जाने से बचें. ओके, क्विक रिस्पॉन्स मिस्टर सुदेश वर्मा फ्रॉम दिस कि अभी गुस्सा है, आक्रोश है लोगों के अंदर, क्यों आप जबरदस्ती रैली करके उनको और प्रवोक कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता तन्वी जी जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हो. ठीक है, आप एजिटेशन कर रहे हैं, आपके मुद्दे हैं, सरकार सुन रही है, सरकार उसको एड्रेस करेगी. लेकिन हम लोगों को भी यह अधिकार है कि हम उन किसानों के पास जाएं और उनको बताएं कि ये कानून आपके फायदे के लिए, उनकी बातों को भी सुने. क्योंकि देश बहुत बड़ा है और बहुत से किसानों ने ऑलरेडी सिग्नेचर कर लिया है नए कानून के तहत कि अपने उपज को कैसे पैदा करेंगे और कहां बेचेंगे. अच्छे दामों में उन्होंने एग्रीमेंट किया है. तो ऐसा मत बोलिए कि आप सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देश बहुत बड़ा है और सरकार सबसे बात करेगी और सरकार सबसे बात कर रही है. पार्टी भी सबसे बात कर रही है, बहुत बड़ी पार्टी है, आप लोगों की कृपा के कारण ही. तो हम लोग सब एक दूसरे की बातों को सुनते हैं. डेमोक्रेसी है, एक दूसरे पर अपनी बात बोलेंगे. वायलेंस अगर यूज करेंगे तो आपका एजिटेशन कमजोर पड़ जाएगा. पूरे देश में भागे फिरो, जनता आपका जवाब देगी. आप धमका क्यों रहे हो? फायदा किसी को नहीं हुआ है. हम तो आपके साथ हैं. तो सरकार जो कर रही है, अगर कटर दी जाते हैं, छत्ती का समर्थन कर रहे हैं क्या? हमने छत्ती का समर्थन किया है क्या? करिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करिए, उनको डिफेंड मत करिए कि गुस्सा हो गया. गुस्सा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस करेंगे. ये जस्टिफाइड नहीं होता.
धर्मेंद्र जी, गुजारिश है आप लोगों से कि बहुत अच्छा एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन है, इसको पीसफुल रहने दें और हर व्यक्ति को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बात करने दें। हाँ, और ये सिर्फ आपका यहाँ पे बोल देने से नहीं होगा धर्मेंद्र मलिक, ये जो लोग कर रहे हैं ऑन ग्राउंड तोड़ताड़, उनको बोलना होगा, नहीं तो आप ही का जो पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, देखिए, हमारे सभी बॉर्डर पर लोग हैं, कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई है। मैं फिर यही दोहराना चाहूँगा कि हम इस तरह से किसी बात को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं अपने लोगों से कि इस तरह की कोई भी कार्य ना करें जिससे मूवमेंट को आक्षेप लगे। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा फिर यही निवेदन है कि अगर कहीं गुस्सा होगा, भाई आप जो है आग में हाथ दोगे तो जलेगी तो है ही। Okay, I want to very quickly go across to Abhimanyu Kohar. There is this other point that has been raised where I want a response now. Abhimanyu Kohar जी, कि बात अगर कमेटी पे वापस आ जाती है तो क्या उस कमेटी के थ्रू बातचीत करने के लिए तैयार है? और तब तक बीजेपी कहती है कि अगर हम इस लॉ को होल्ड पे रख देंगे तो जो किसानों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और नए लॉज के अंदर काम करना शुरू कर दिया है, उनके नुकसान का क्या होगा? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा और फिर आपके सवाल पे आऊंगा। अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई बहुत किसानों ने समर्थन किया है सरकार का इन कानूनों के विषय पे। तो मैं इनको बताना चाहूंगा, शायद इनकी जानकारी में नहीं है, अभी कुछ दिन पहले आरटीआई में जवाब मांगा गया कि किन किन किसानों से और किन किन किसान संगठनों से आपने बात की, जरा उसका जवाब दे दीजिए, जरा उसकी लिस्ट दे दीजिए। तो उस आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है। कोई अगर नगर निगम की भी कोई बैठक होती है तो उसकी भी मिनट्स नोट की जाती है। और यहाँ पे सरकार ये कह रही है, देश की सरकार कि उनके पास कोई लिस्ट ही नहीं, उनके पास कोई डाटा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा प्रवक्ता कहते थे उन्होंने 93 लाख किसानों से बात की। हम उनसे ये मांग मांग के थक गए हो, कौन से 93 लाख किसान, जरा हमें सूची दे दो, हम भी तो उसको देख लें वो कौन से हैं, लेकिन अब तक नहीं दी है। दूसरी बात, इन्होंने कुछ दिन पहले सरकार ने दावा किया कि हरियाणा के 1 लाख किसानों ने इनका समर्थन किया। जब हमने उनकी कॉपी चेक की तो मालूम चला वो 116 फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख के दे गए, और वो भी वो एफपीओ थे जो ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। दावा किया गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने इनका समर्थन कर दिया। तो हमने इसको चेक किया तो मालूम चला एक व्यक्ति जो बीज बनाने वाली कंपनी और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के लिए दलाली करने का काम करता है, वो खुद को किसान नेता बता के सरकार का समर्थन करता है। और दूसरी बात, जो अभी धर्मेंद्र भाई जी ने भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा, आप कल भी देखें, यदि आप करनाल के विषय में देखें, भाई मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? मुख्यमंत्री कह रहे थे वो किसानों के साथ संवाद करना चाहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, ये भी तो किसान थे जो आपके पास आना चाह रहे थे, आप संवाद किससे करना चाहते थे? आपने रोड ब्लॉक कर दिए, आपने लाठीचार्ज कराया, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो आप किन किसानों से बात करना चाहते थे? और यदि संवाद करना है तो बॉर्डरों पे किसान बैठा है ना, जरा आके इनसे संवाद कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? और हमने कोई हिंसा नहीं की। कल पहले भाजपा ने गुंडे बुलाए हुए थे अपने, भाजपा के गुंडों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस से गोले छोड़े, हम तो निहत्थे गए थे। तो ये किसानों पे आरोप लगा देना ये ठीक नहीं है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और उसको किसी भी तरीके से ऐसे गलत आरोप लगाने का प्रयास ना किया जाए। ओके, और मेरा सवाल जो था आपसे कि भाजपा ये कह रही है कि इन लॉस को अभी कैसे रोक दिया जाए, जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिए उनका नुकसान का क्या होगा? देखिए, जरा एक बार वो लिस्ट तो ला दो, अभी किसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? और रायसेन में मध्य प्रदेश के भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, जिन्होंने पहले का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उनकी फसल की क्वालिटी कम बता के, उनके सैंपल फेल करा के कंपनियां उनकी फसल खरीदने से मना कर रही है। कई करोड़ रुपए लेके जा रहे, अब तक उनकी पेमेंट नहीं हुई। सरकार तो दावा कर रही थी 3 दिन में पेमेंट करा देंगे जी, कई महीने हो गए, ना कोई एसडीएम सुनवाई कर रहा है, ना कोई कलेक्टर सुनवाई कर रहा है। तो आप किन कॉन्ट्रैक्टों की बात कर रहे हैं? जरा हमें भी तो सूची दे दीजिए, कितने लाख किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमें भी तो बता दीजिए। हम भी किसानों के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये सवाल है। आदिल, I will come to you, but let BJP respond to what Abhimanyu Kohar is asking. Yeah. पहली बार अभिमन्यु जी, आपने जो बोला कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किसान नहीं हैं, तो अगर कल उनके खिलाफ एक्शन हो भाजपा के कथित कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो उम्मीद है कि आप समर्थन करेंगे इसका, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता अगर डिसिप्लिन तोड़ के इस तरह का काम किए हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वायलेंस को अडॉप्ट किया। वायलेंस कोई भी अडॉप्ट करे, वो कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। मानते हैं ना इस बात को?
तो कल अगर एक्शन होगा तो हमारे साथ खड़े होंगे, ये नहीं बोलेंगे नहीं किसान गुस्सा में ऐसा किए, ऐसा नहीं बोलेंगे। नॉन वायलेंस अगर है तो ठीक है, वायलेंस यूज किया तो गलत किया, कानून का वायलेट किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप इस बात को समर्थन देंगे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। दूसरी बात, किसने किया साइन, किसने नहीं किया, आप देखिए बहुत से खबर आ रहे हैं, अखबारों में ही आ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। न तो मेरे पास वो लिस्ट है, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार के पास जरूर लिस्ट होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा जाए तो निश्चित ही वो लिस्ट मिलेगा, तो आपके इस क्वेरी को भी इसका समाधान मिल जाएगा। देखिए मुद्दा ये है कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि कोर्ट जो बोलता है सरकार तो बाध्य है उससे, कोर्ट से अलग तो सरकार जा ही नहीं सकती, सरकार को उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन आपके ही धर्मेंद्र जी यहां बोलते नहीं, हम तो खूंटा यही गाड़ेंगे, कानून जब तक वापस नहीं होगा हम एजिटेशन करते रहेंगे। मतलब कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, आप जो बोले वो फाइनल जब तक नहीं होता आप नहीं बात मानेंगे। आप चैनल पर बोल दीजिए ना तन्वी जी को कि नहीं, जो कोर्ट बोलेगा हम मानेंगे, सरकार भी माने, ऐसे ही होता है ना, हम कोर्ट से ऊपर नहीं है, आप भी नहीं है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो लॉयर्स हैं, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, किसी कानून को बनाने का अधिकार उनको जाके किसानों से बात करनी होगी और एक कंसेंसस बनाना होगा। वोट कहां से बीच में आ जाते हैं? धर्मेंद्र मलिक क्या बोल रहे हैं? यही तो कोर्ट ने बोला ना कि समर्थक लोग नहीं आए हैं, जो अपोज कर रहे हैं वो लोग गए, मतलब आप लोग ही गए हैं ना कोर्ट, हम लोग तो नहीं गए हैं। हम आंदोलन करने के लिए, सरकार के सामने बात रखने के लिए आए हैं, और हमारा जो मुद्दा है, जो मांग है, वो सरकार से है। देश में सरकार जब समाधान नहीं करती तब कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। सरकार नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे, फिर जो है कहे कि हम समाधान नहीं कर पा रहे, आप कोर्ट से समाधान करा लें। नहीं, कोर्ट नहीं आती जब तक आप जाते नहीं है कोर्ट के पास, कोर्ट नहीं आती। ओके, Adil wants to come in. Adil Singh Bopar, I had to make a point. Yes, go ahead. हम कोर्ट में नहीं गए हैं। Tanvi, can I respond? Tanvi, the Bharatiya Janata Party is like always misleading your viewers. This is a livelihood issue and it's incumbent on the ruling dispensation to solve this crisis, because this is a crisis of their own making, number one. Number two, it is quite evident, and what we see on national television, that there is a widening trust deficit between the farmers and the government of the day. And the reason is the conduct of the Bharatiya Janata Party ministers and their spokespersons. Manohar Lal Khattar called these protesting farmers as anti-nationals and Khalistanis. So this kind of anguish is legitimate and justified. If the Bharatiya Janata Party has empathy, they must apologize for the conduct of Manohar Lal Khattar and the other ministers who've been labeling these farmers as anti-nationals. Number three, this is again playing with fire. Mr. Verma, you are not letting me complete. Please let me have my piece. You are again harping on the same point again and again, trying to create a wedge. That point has already been resolved. Number three, Singh has already said, you know that he's an honorable minister, he has already said about that issue. Mr. Verma, I don't want to speak over you. About Khalistani. Why you are bringing the issue of Khalistani again and again? Tell me that. Why you have this present crisis. You have an agenda. You are trying to drive that agenda, Tanvi. That is the problem. Okay, one at a time, please. Adil, finish your point. Yes, finish your point. Thirdly, Tanvi, it is incumbent on the Prime Minister to directly speak to the farmers. The Prime Minister claims to have his monkey baths. He talks down to people. What is holding the Prime Minister back from directly speaking to the farmers of this country? Is it the BJP's case that these farmers are not Indian citizens? These are annadatas. I don't know how that's going to solve anything unless the demands that the farmers are making are met. Now, whether the Prime Minister delivers on that or he gets the Agriculture Minister to deliver on that, I don't know how that's going to make any difference. Just like as much as it breaks my heart that so many farmers have lost their lives during this protest, and you expect the BJP to express their sympathies about the lives that have been lost. I don't know what that will achieve. When for years together and decades together, every single year, hundreds of farmers have killed themselves in this country and nobody has bothered. Showing empathy on a TV channel now is not going to get us anywhere. Tanvi, with due respect, you are conflating two issues. The issue today before us is that farmers have lost their lives at the protest sites. And they've lost their lives because of the bitter cold, because of difficult living conditions.
Yes, Prime and Minister for at years the together, time. Adil, government after government has ignored all of their cold conditions, Let me all of complete. their tough conditions. That's Tanvi, why let they me have killed complete. themselves. Let's Tanvi, not now pretend that the farmer suicides have nothing to do with the government let me apathy at complete. all. Tanvi, let me complete. The Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi, has all the time in the world to tweet on forest fires, but he has no time to express a word of sympathy and compassion You have to problem the with the farmers Prime who Minister. are losing Can I their answer lives, this? who have attained shahadat and martyrdom at Tekri and Singhu border. This is the Can I answer this? insensitivity of the Narendra Modi administration. Yes, okay. It is a Sudesh Verma government wants to answer which that. exists You to see, further the Tanvi, interests their of the problem Adanis is and the Prime Minister Ambani's. Narendra This Modi. is the They don't fundamental have any other problem. problem. You And the see, I've farmers never of seen this a country Congress have spokesperson realized or a this, Congress that leader we talking cannot through accept Okay, that facts. their Adil, point. let They are him only respond. talking Let of him respond emotions. on the point you've raised. They are Yes. only talking of emotions. All the time they will quote Khalistanis and all these things. Farming They were is an spoken in emotional the issue for context. us. It is trying to Farming is defame an farmers' emotional issue. agitation. We have It is a always way of warned life for farmers us, Mr. that Verma. please take care Farming that is a these matter of elements do livelihood. not Yes, dictate your it is an agitation. emotional issue for us. These elements do not hijack your agitation. We are warning the farmers that please save yourself. Unlike the Congress, which is trying to, take the emotional quotient, they are not trying to talk through facts. We are ready to debate through, but they don't have any facts with them. All the Okay. time they talk Okay, emotions. okay. Let me bring in two panelists who haven't spoken for a while now. Mr. Desh Ratan Nigam wants to make a point. Mr. Nigam, to you first, and then I'll go across to Mr. Pushpender Singh, who's just joined us. But first, Desh Ratan Nigam. Yesterday, Mr. Rakesh Tikat made a statement about Supreme Court saying, let Supreme Court do legal things or other things, we are not interested. So it raises a very important question. Even if a committee is formed and they come to some kind of a conclusion and the Supreme Court rules on it, can their lawyers or their leaders commit and give a guarantee that they will abide by them? That's a very important question, and then they will leave the protest. So that is another issue which is very important and has to be kept in mind. An organization called Sikh for Justice got involved in this agitation, which has been declared as an unlawful association under the Unlawful Activities and Prevention Act by the Delhi Chief Justice Tribunal of Delhi High Court. That got involved in it, and some of their people, and that's all over the Twitter, which is there. So it's not that it has been said in vacuum. Certain unwanted elements have infiltrated, and farmers' leaders should be careful enough not to give them space, or else even if they have genuine issues, they will get sidelined. Okay, let me get in Mr. Pushpender Singh, President of the Kisan Shakti Sangh, to respond to that. And Mr. Singh, सवाल यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय ले कमेटी सेटअप करने का, अगर वो कहते हैं और सरकार मान जाती है कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन रोक दो जब तक बातचीत चल रही है, तो क्या ये प्रोटेस्ट बंद किया जाएगा? देखिए तन्वी जी, सुप्रीम कोर्ट का सारे देश में संवैधानिक संस्था है, सब लोग सम्मान करते हैं और किसान संविधान में विश्वास रखता है और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखता है, तो उसकी बात को ना मानने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमें ये भी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करेगा और वो न्याय करता रहा है। पहली बात तो यही है। दूसरा, किसी भी किस्म की हिंसा का हमारा आंदोलन कोई किसी का समर्थन नहीं करता है। यदि किसी नागरिक को असुविधा हुई है या कहीं कोई हिंसा हो गई है, तो भैया जिसने हिंसा की उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, किसान अच्छी तरह समझते हैं उसमें हिंसा यदि हो जाती है तो आंदोलन बदनाम होता है और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाता है। दूसरी, लेकिन जहां तक आपने कहा कि भाई क्या ये समाप्त हो जाएगा, देखिए इसकी 2-3 मांग है। एक एमएसपी की जो मांग है वो सर्वोपरि है, बड़ी मांग है कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी किया जाए। जब तक वो मांग नहीं मानी जाती है, और जहां तक इन कानूनों का सवाल है, ये रिपील हो या सस्पेंड होने के बाद कमेटी किसानों को संतुष्ट कर दे और किसान भाई कहें कि ठीक है भाई हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, तो ये जब तक दोनों काम नहीं हो जाएंगे तब तक जो है आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। जी, पर बोला तो यही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो वकील हैं जो सारे किसान यूनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रशांत भूषण और एचएस फुल्का और दुष्यंत दवे जो रहते हैं कोर्ट में, कि आप जाएं और उनसे बात करें और बताएं हमें कि अगर कमेटी बनाई जाती है और लॉज होल्ड पे डाल देंगे
तो क्या किसान घर जाएंगे? एटलीस्ट जो इतने लोग वहां ठंड में बैठे हैं उनमें से कुछ को तो घर भेजा जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो चाहे तो जो है अगर सस्पेंड हो जाए तो महिलाओं को या बच्चों को भेजने की बात है। इसके विषय में तो किसान यूनियन के हमारे भाई मलिक जी भी बैठे हैं। स्वयं राकेश टिकैत जी से प्रश्न पूछा गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि ठीक है, किसी को भी हम असुविधा नहीं करना चाहते, लेकिन बुजुर्ग जो यहाँ से गए हैं ये फिर आ जाते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे वहां पर आंदोलनरत हैं तो हम भी वहां बैठ जाएं जाकर के। तो इसमें जो है किसी को असुविधा ना हो, ये हम चाहते हैं और एक बीच का रास्ता निकले। आंदोलन बहुत लंबा समय तक चल गया है। एमएसपी की व्यवस्था इंडिपेंडेंटली अब भी सरकार चाहे तो कर सकती है, और सस्पेंड होने के बाद इसको स्टे लगने के बाद कानून पे कमेटी बनेगी, उसमें जो जैसा भी आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा उसको सर्वमान्य है, सबको मानना होगा। तो इसमें किसान इसके लिए कोई हठधर्मी नहीं है। But when that happens, Mr. Sudesh Verma, is that not going to be a proof that your own efforts have failed to end this deadlock, the conversations and the many meetings that you've had, which is why the Supreme Court sounded so agitated today? See, we are also agitated that why, despite our best efforts, we are not able to reach a solution. And we think that political parties are trying to create that problem by fanning sentiments that should not exist. And Congress is primarily responsible for that. I am saying with a lot of responsibility. They have openly supported the agitation. They are not ready to talk on facts. And that is the basic problem. But we are very confident. Good sense will prevail. We are very confident that farmers will realize that the government is for them. They have voted this government to power. We would not do anything that would go against them. And it is this sense that is forcing us to believe that some good outcome will come at the next round of talks. Tanvi, an allegation has been made against the Congress. Please Yes. permit me to respond. Yes. Tanvi, The whole firstly, country is talking. the Supreme Court orders puts a stamp on the Bharatiya Janata Party's incompetence in diffusing the crisis. Number one. Number two, yes, Mr. Verma, we stand with our farmer brothers. We support this peaceful agitation and we reiterate our demand. Say that we'll provoke them. We'll provoke them even if they want to reach a conclusion. Yeah, I was, them. one minute. Adil, I that. was wondering why are you reacting to it so seriously? Because what Sudesh Verma is saying is a fact. You are openly backing the farmers in this protest. What is there to defend? It's not an allegation. I'm saying that they are provoking. They are provoking that they don't reach a I don't think the solution. farmers are getting provoked by Congress party now, Mr. Sudesh Verma. Now you're giving them far too much We stand credit. with the farmers. We stand with the farmers. Let me make this very clear. They are with us, we are with them, That we don't need to be legitimate. there. That Please don't try to legitimate. do politics through their shoulders. Have some independent We need a law existence. that MSP should be made a legal right, something which Mr. You have Modi no also locus advocated. standi to Number speak one. on this issue. Number two, You have already. One minute, one at a time, please. Adil first, that yes. laws seek You have to already usher in the implemented geo model into the agriculture by sector. you. So you have no locus standi. Gentlemen, I can't understand either of you, neither can anybody else. We'll have to go one at a time, please. Yes, Adil. Tanvi, we support the demand of the farmers. Let me make this very clear. And Correct. the farmers and the Congress party will not permit the geo model of agriculture to start off in this country, because this is going to put us onto the path of destitution and penury. We are very clear about this. These laws must be immediately repealed, and the Prime Minister also must apologize. After all, 60 human lives, 60 precious lives have been lost because of his arrogance and insensitivity. Okay. Let me move on. now? Let me move on and go to the final point that I wanted to ask पुष्पेंद्र सिंह, आपसे ये सवाल, ये बार बार बोला जा रहा है कि अगर ये लॉज को होल्ड पे रख दिया जाएगा तो बाकी देश में जहाँ पे ऑलरेडी इन नए लॉज के अंडर पे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है, वहाँ पे किसानों का लॉस हो जाएगा। इसका क्या जवाब है आपके पास? हाँ, इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आई है कि लगभग 2000 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन रहेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गए हैं या उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक्शन शुरू हो गया है, यानी बुआई हो गई है फसल की, उसको कंटिन्यू कर लिया जाए, नए कॉन्ट्रैक्ट ना बने। ये इस तरीके से इसको होल्ड किया जा सकता है, जिसमें ऑलरेडी पार्टी चली गई उसको थोड़ा सा अब कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay. I can speak on that.
Yes, I can yes, speak yes, on. Mr. Nigam. Mr. Nigam, there are two sides to it. One side that says that, already where the contracts are taking place, there are issues, grievances which are being raised, which are not being resolved. And obviously, if you are in a kind of a limbo with these laws and there's a deadlock, the implementation will also be half-baked on ground. Tanvi, the position of law is that once a stay is granted, it has to be prospective, it cannot be retrospective. So, what has been done will continue. So, what Pushpendra is saying Okay. would hold because it will not affect the already contracts which have already been undertaken. Okay, fair enough. Thank you for that clarity. So even if tomorrow the Supreme Court decides or the government decides before the Supreme Court can that we're going to put these laws on hold, the implementation of these laws pending a conversation via a committee that is set up by the Supreme Court, then it will only be prospective and not retrospective. So even if there are farmers who've actually already undertaken some contracts, they will not get impacted. I'm completely out of time. I'm going to thank all of the panelists who've joined us right now. Because I think the Supreme Court has made their view very clear. Without going into the merits or the demerits of the law, that's not what the Supreme Court is exploring right now. But they've definitely made it clear the central government's handling of this issue and the farmers' grievances and bringing in these laws the way it was done and it's been implemented and the negotiations that have been held by those who are protesting hasn't been up to the mark. This is the top court which is saying it. In the last few hearings, the top court has also indicated and nudged the government to take the decision by itself of putting these laws on hold. Nobody wants a situation where the judiciary has to step in and block the legislations that have been passed by the government or the parliament. But we have come to a point where this deadlock doesn't seem to move at all. And more farmers are just gathering there at the national capital borders and the government is unable to break that deadlock. So there can be a situation now where the Supreme Court does see merit in stepping in, if the government doesn't, to say suspend these laws until a detailed negotiation is held, a committee is formed, and this committee will not only hear the farmers who are protesting, but this committee will then have to speak to all kinds of representatives of farmers from across the country and see if there is a genuine concern for everybody or only a bunch of farmers, depending on where they are, what rules they already follow. Let's wait and watch what the final decision is by the top court. Thank you so much for joining us on this conversation.